Vastu, the house should be square in shape. It should be ground floor. Like no first floor, second floor. No first floor. Only the kings were allowed to have first floor. No multi-story construction was designed in Vastu. According to Vastu rules, kitchen would be in the southeast, the master corner or the master bedroom would be in the southwest. If some people are coming, guests and all, then they should be in the northwest and the north. Your puja room would be in the northeast. What are some of the Vastu tips that we can keep in mind when constructing our home doors? You are inviting the goddess or inviting wealth and health. But through your door, all negative things can also come. How do you get rid of that? Take some small glass bowls. They should be transparent and put some salt in it. And if possible, change that salt once a week. Likewise, if you can wash your floor with salt water, use rock salt, but some natural salt, okay, not iodized or processed salt. Let us make that clear. You have to use the compost from inside the house. Usually these property agents, what they do, they keep the compost on the threshold, which is very wrong. So all those who are going to see our podcast, they should learn at least one thing. When you use the compost, use it from inside the house and if possible from the center of the house. Do you come across any Vastu compatible flat? I've seen only 2 flats which were Vastu compliant. 97%. The ladders are in the wrong direction again over there. So all these builders who go around projecting their All property lies. as... All lies. Professor Dr. Giridhar Shetty, a former professor of physics of 37 years, has been a veteran Vastu guru since 2000. Is the concept of open kitchens okay? Don't have open kitchens. Kitchens are to be closed. Because the process of cooking is the process of doing an yagna. Suppose you have a bed and mirror is over here, then your stomach is getting reflected in the bed. You will get troubles with your stomach. And those troubles will be serious troubles. So medical में फुकट का खर्चा करोगे तुम. People also have a lot of issues with not having sound sleep. What are some of the tips? After a person dies, we keep the head in the north. Why? Using the power of pyramids, Dr. Shetty has trained thousands of students, including architects, interior designers, businessmen, and college students, through his various online and in-person training modules. Children's room should be in the west or in the east. That is the best room for the children, so that they rise up early. एक हाथ से ये मुद्रा पकड़ कर रख पढ़ते हो. 2 बार पढ़ेगा ना, it will be printed on his mind. तो एग्जाम में खाली अगर कहीं पर अटक गया हो, तो just he has to think and just do this. Same mudra again. This is another way of copying in the exam. Never give a guest the southwest room. That is the master's room. वो 6 दिन के लिए आएगा, 60 दिन जाएगा. You have also spoken about some tips to keep in mind when we are looking to buy a plot. You have to go to that site and then dig up a 1 feet by 1 feet by 1 feet and 1 feet deep. एक perfectly ऐसा कट करके मड निकालो, फिर उसमें पानी डालो. अगर पानी लीक हो गया उस जमीन में, तो ये प्लॉट मत खरीदो. अगर पानी उधर के उधर रहा है 1 घंटा तक, तो then this is a good plot. Easiest way to check a property, जो आप फ्लैट खरीद रहे, प्लॉट खरीद रहे कहीं, take your wife along with you. And if that wife feels A recipient of over 100 awards, Dr. Shetty is known for solving real-life problems related to health, wealth, business and relationships. फिर लोग महाभारत का सीन रखते हैं, कृष्ण अर्जुन, वो रखो मत, तुम्हारे घर में बैटल्स होने के चांसेस. These photographs or paintings have an energy of their own, so that will dead soul को तुम वापस रिवाइव करो. I have seen people अगरबत्ती दिखाते ग्रैंडफादर के फोटो, तुम अगरबत्ती दिखाते हो, वो अटका हुआ है, तुम्हारा कहाँ पर नुकसान करेगा तुमको मालूम नहीं पड़ेगा. So how can success in careers, professions or businesses be ensured? You use it. Your name on one side, the boss's name on the other side. You use it and in 15 days, the boss will be coming to your table and having tea with you. बच्चे नहीं हो रहे हैं. They want to conceive but I can't conceive. वो आपके बेड के नीचे डाल दो. There is a box over there. You put a wish के I am trying to conceive. Then just sleep on that bed. मैंने ये results ना 3 बार लिए हैं. कि people have waited for 8 years, tried IVF twice, लेकिन third time वो successful हुए. Do spirits exist and how do I know if my house is possessed with spirits? हमने possession के cases भी solve किए. एक case मैं बताता हूँ. एक plot एक आदमी ले लिया. It was some burial ground. Then he started speaking to the spirits. कि देखो कल सुबह को मैं आने वाला हूँ और तुम लोग के लिए खाना लाऊं. तुम लोग सब इधर झाड़ भीड़ पे लटके हो ना, सब मेरे को मालूम है. Marrying quantum physics with traditional science of Vastu, it is our pleasure to have with us Professor Dr. Giridhar Shetty. From modern science to traditional science, from physics to Vastu Shastra, what made you come into this? This science of energy, it comes from our quantum mechanics only. जो आइंस्टाइन का quantum physics था, relativity वगैरह,
वहीं से इसका बिगिनिंग होता है। अगर वास्तु के रूल्स फॉलो किए होते तो तुमको वैसे भी वास्तु करना नहीं पड़ता था घर में। We seldom come across individuals who are pioneers of traditional sciences and who also come from a solid modern science background. A professor of physics and a Vastu guru of 24 years, we couldn't have had anyone better than my guest today to offer authentic scientific insights into the world of Vastu Shastra. If you haven't already, I'd be very grateful if you can subscribe to our channel. Namaskaram and Namaskar to welcome you. to our podcast, Professor Doctor. I've always been very intrigued by the subject of Vastu Shastra because essentially it is the science of structures and we are constantly living in structures, be it indoors or outdoors. So Vastu is there everywhere. Yeah. Can you tell me what exactly is Vastu Shastra and how does it contribute to our life? Originally, when man progressed, the science of Vastu was not developed. The Vedas were not written down. Okay. But groups of people, each having their own wise man, all these wise men going up somewhere in the mountains and thinking and thinking and thinking what should be done with the house. And then they sort of, in different parts of the world, these thinkers got some formulas that fire should be in the southeast, or you should have openings in the northeast if possible. Okay. How All did they get this understanding? through experiments. See, they have worked on that problem, a single problem like fire, where should it be? Or where should a man sleep? That single problem, that thinker must have thought about it in the beginning. His son takes over from there, his son takes over from there. And for generations, they have experimented with houses and tried to establish formulas. These formulas are present day Vastu formulas. The first thing they found was, if you bow before someone, your hunt is better. Okay. You are more protected. So, people started believing in some waterfall or some tree or some stone, just a boulder or something like that. And the first thing they thought of when building real proper houses, they thought of was building something to protect those stones or those trees or something like that. That is the beginning of your, what you call present day Vastu. Vastu rules, traditional Vastu rules are only about building temples, powerful temples. Okay. The idea of building homes was not there at all. Okay. You make a powerful temple, then you are taken care of. Later on, as history progresses, the generals and all these people, ministers and generals, sort of, the king was just a a demigod, and they became real powerful. So they wanted house. Now, by the end of 20th century, everybody wants a Vastu house. But the rules are essentially the rules that were designed earlier. For the temples. For the temples. In the Yajurveda, there is a chapter called as Sthapatya Shastra. Sthapatya Shastra, in South India, even now you have Sthapatis. Sthapatya Shastra is essentially your Vastu rules, traditional Vastu rules. Okay. And they are all about building temples only. But the Sthapatis, that is the people who are architects come Vastu consultants in those days. Okay. See, now because of this English education and all, we have got architecture. Correct. Where there is no Vastu involved. In fact, I have met many architects who say we don't believe in Vastu rules. But in those ancient days, the architect himself would be the designer, the Vastu consultant, and the builder also. He would take the complete responsibility of building a site, a palace or maybe a home or whatever. So, Vastu rules were already used when the building was built. Like, in Vastu, we have the house should be square in shape. It should be ground floor. Okay. The house should be on the ground. And if possible, the house should be totally ground floor. Like no first floor, second floor. No first floor. Only the kings were allowed to have first floor. Some Chakravarti king would go for a second floor. Otherwise, a normal Raja would go for a first floor only. Or the Nagar Seth would go for a first floor house. Because you would have to have a granary at the ground floor. Na? So you would move up. But then, most of the houses were ground floors. No multi-story construction was designed in Vastu. And all the rules were, the house was built according to Vastu rules. Like the kitchen would be in the southeast, the master corner or the master bedroom would be in the southwest. If some people are coming, guests and all, then they should be in the northwest and the north. Your puja room would be in the northeast. This was designed while making the home.
Now, today what has happened is we buy flats and we buy flats on the 15th floor. Yeah. We are not remotely connected to the earth. In fact, in Bombay, I think the higher you go, the floor price is higher. Yeah, Some yeah. such thing. That is also there. Because they become disconnected with the realities of the earth. The best Vastu solution for anybody, the best Vastu tip for anybody is take a walk in the morning barefooted on the ground. Your energies and your ambitions will keep on soaring. People who are not connected to the earth will not get blessings from the earth. Your connections is weak, your ambitions become weak. Your energies go down. Okay. That is how we are connected to Vastu, You should be connected to the earth. That is why the houses were designed according to ground floor. Only up to the ceiling would be the first floor. That is about traditional Vastu. Hmm. So, Okay. And where did this concept of directions come into the Vastu? see, it is said, I have got a diagram over here. I'll show you. Your house is square like this, right? Okay. See, we have taken a square house, Correct. that yellow patch. Red arrows are arrows coming from outside. That is energy coming from 8 different directions. And that energy is spread from the center, okay, the Brahma Bindu, in 8 directions again. That is, if this is your house, energy should be given to every part. That means suppose you have your kitchen over here, your bedroom over here, that is the north area, that is the northeast area. Energy comes to, it is like, the human structure. This is your brain, this is your spinal cord. Your impulses come from everywhere to the spinal cord. That is the Brahmastan, the central portion of the house. And your mind decides, like suppose I touch a fire over here, immediately my hand comes off. Why? Because your mind gives it the command that the hand should be pulled back. Correct. Okay, that is the Brahma Bindu. The mind is equivalent to the Brahma Bindu. The spinal cord is equivalent to the Brahmastan. Energy impulses go from everywhere to the spinal cord. And whatever the mind commands, the spinal cord conveys it to that relevant body part. And then that body part moves or whatever Correct. it does. Yes. Okay. Same way, energy comes from 8 directions to this place. It has to be collected in the Brahmastan and then distributed properly so that everything in the house moves okay. So where is the Brahmastan in the house? Yeah, I'll show you. This is the map. Okay. This is a square. The central portion where all the axes are meeting Correct. is the Brahma Bindu, and the central portion over there is the Brahmastan. That could be anything, any room in the house. This is the entire house. Okay. You have to consider the entire house. This is not for a room. This is for Okay. the entire house. It has to be like that. Okay. So, Brahmastan is the most important part in your house. Hmm. Our whole pyramid theory, the pyramid of Vastu that I Yes, do, yes. is based on Brahmastan only. Okay. So Brahmastan, sir, could be anything in the house, or is it the entire house? If it is a 1-bedroom hall flat, Yes. then it will be the passage. It is a 2-bedroom hall flat, it will be the passage. Okay. The center of the flat will come in the passage, isn't it? Center of the house will come in the passage. Right. Brahma Bindu also might come in the passage. If you have got a regular Okay. rectangular sort of an house that we have in Bombay, Right. then mostly it will be the passage. Okay. So somewhere that in the passage or maybe the first bedroom, you will get the Brahmastan. Okay. Central portion of you have to take the house entirely Okay. and then draw the outline, Mhm. and from you draw 2 diagonals, and in the center, the point that you have, 1/3, 1/3, 1/3, you have to divide the house. So just very quickly, sir, Brahmastan could really vary from house to house, right? Yeah, Okay. but it is the central portion of the house. Got it. It is 1/9 of the house. The area is 1/9. Okay. Okay. Got it. So, sir, coming to homes, I'm sure all viewers want to know about how, or techniques rather, to positivize their homes. So, starting with the threshold, हम कहते हैं ना कि घर की लक्ष्मी चौखट से आती है. Hmm. So, the threshold has a lot of significance in our Yeah. Indian culture. Yeah. Can you tell us more about this? Bangalore or South India, you will see people draw rangoli outside the Yes. house in the morning. Yes. Okay. So that is one way you invite Lakshmi in the house. Rising early and having an early bath is an invitation to calling Lakshmi into the house. Okay. We are talking simply about wealth and health also. For health and wealth, you should rise early, rangoli outside the house,
decorate your threshold as much as possible. Do you know people tika lagate hai, chandan lagate hai, white something they put. We call it shade in Karnataka. That is, you get that white material from the bottom of the well. You have to dig into the well, and that pulp that you get, that you use for decorating the threshold. So these are things for the threshold. But in the evening, if there is a prayer, ideally you have 2 prayers in the day, morning and evening prayer. But evening prayer, if it is a joint family prayer sort of, you don't have to, it doesn't have to be elaborate. But the lady of the house has to light the lamp and put the dhoop or lobhan. In South Indian houses, we eat coconuts. Correct. So in South Indian houses, they have those coconut shells. So the lady burns that coconut shell and puts some incense on that. Yes. Incense. And then that the smoky sort of a thing. Lobhan we call in Maharashtra over here. Okay. Lobhan we put. And then that smoke is created. And she goes from each room to each room right up to the threshold of the door. Okay. But that, if you do, that is actually cleansing. So cleansing all the negative energies from the house. That can be done. Decorating your threshold is there. In the threshold, the rangoli is also made of the rice paste. That is where you had bungalows and all those kind of things, because you are inviting those insects and birds to come and pick up the rice. Okay. So that bird feeding is also done. Okay. Okay, but in flats that is not possible. Yes. In Bombay we don't see sparrows now. Yes. It's not possible. But whatever you can do to decorate your house. So normal rangoli powder also works. Normal rangoli or even paint. Now what we have done is we have got stickers over here. So once a year you change the sticker, that's all, before Diwali. Yeah. Otherwise it's already painted over there. Those kind of things. Lakshmi footprints you get, everything. But whatever it is, try to do that. And in the evening, that prayer along with that loban, that will be very good. But another thing to take care of our vastu, because with all these precautions, you are inviting the goddess or inviting wealth and health. But through your door, all negative things can also come. How do you get rid of that? You take some small glass bowls, see-through. They should be transparent, not colored. And normal sea salt. You take 4 bowls, 4 corners of the house, maybe under the cupboard or maybe under the drawer set or under the bed or somewhere, or near the bed also. It doesn't, if you can do it in the corners, very good. If you can't do it, at least 4, nearby areas. Keep these vessels and put some salt in it. Bowl, sea normal salt. bowl. A small bowl with some crystals of salt in it. And if possible, change that salt once a week at least. Change that salt, what will you do? Take the salt, the bowl, flush it out. You have got toilets in the house. So flush it, wash it, dry it and put fresh salt and keep. Likewise, if you can wash your floor with salt water. That means you swab the floor once with salt water. Take water in the bucket and put some salt in it. But don't put iodized salt. You have to use natural salt. If you don't get sea salt in your area, then use rock salt. But some natural salt. Okay, not iodized or processed salt, that a table salt or something will not do. Swab the floor of your house, if possible every day, especially if you are in business where people come into your house regularly because of your work. Then swab your house daily. First swab it with salt water, then with normal water you can clean it. Salt actually dissolves everything. If you want to soften up anything, you use salt. That is, it is a great dissolver, digester sort of a thing. So all the negativities that come in are processed. So no traces are left behind. Salt takes the negativities. That is why you throw it out the next day or then at the end of the week or something. So salt is good way to protect, to keep the positive energies high in the house. Internally also you can do a lot. Yeah. Because we have got something called as living Vastu concept. Okay. What you can do for yourself as an individual. That morning walk on the earth, on the ground floor with bare feet. If you don't have lawns in your building, okay, then walk on mud. If there is no mud, then walk on the concrete floor. What happens is when you walk barefooted on some floor connected to the earth, at least your negativities goes off. If you are walking on a lawn, which lawn means grass,
what happens is the positive energies from the lawn move on to you. Hmm. But if that is not possible and you are walking on concrete or maybe a tar road, at least your negativities will go. Okay. So Okay. walking on a high-storied apartment flat does not Doesn't work. You have to be connected to the earth. Okay, got it. So you'll have to take that trouble of getting down to the ground floor. If there is a lawn, walk on it. Okay, And barefooted. okay. Earthing is very good. Yes. What are some of the Vastu tips that we can keep in mind when constructing our home doors? So from the money point of view, best door is the north door. A door in the north. But first we'll have to understand how do you look at north? Which is north? Yes. So when you come into this house, you have to, there's something called as a compass, magnetic compass. You get for 50 rupees at any stationery store. That compass has to be kept at the center of the house. Okay. I said Brahma Bindu. Yes. If possible, Brahma Bindu. But if there is a wall over there, maybe 1 feet away from the Brahma Bindu, somewhere in the Brahmastan, and there you keep it and find out which side the red magnetic needle is pointing. The red needle always points to the north. So if I kept the compass over there, and if it is pointing this way, then this is the north wall. Then this will be the east wall. Then that will be the south wall. And that will be the west wall. I had gone to see a property with my friend. And the agent over there, "Arey sir, ye north ka darwaja hai." बोला कहाँ से north का दरवाजा है? He didn't know I was a vastu consultant. Sir, देखो आप north में अंदर जा रहे हो. When you are stepping into the flat, you are moving towards the north. And he got the compass out of his pocket. देखो सर, आप north में जा रहे हो. बोला तो फिर ये south का दरवाजा होगा ना भाई. Correct. समझे? North में अंदर नहीं जाने का. The direction in which you exit, that should be in the north. Then it is the north door. Okay. Okay, like I am standing inside the house Yes. and the door is over here. Yeah. Compass has pointed that this is the north door or the north wall. Yes. Then when I step out, this will be the north door. Correct. Na? Yes. Usually these property agents, what they do, they keep the compass on the threshold, which is very wrong. That is a wrong practice. So all those who are going to see our podcast, they should learn at least one thing. When you use the compass, use it from inside the house and if possible from the center of the house. So my exit decides my Yeah, direction. exit is the direction which you have to consider. Got it. What about the living room and the dining room, sir? The living room should come in the northwest because outside people are going to come and discuss, and northwest is the direction for communication. So in the living room, you will be discussing about business ko kaisa badhaye. If your business people are coming. Yeah, even if you are sitting with your, say, maybe children, then you have to tell something inspiring to them. That will not be communicated to them unless you are in the northwest corner. If you want to inspire them to do something better in studies or something, if you tell them in any other area of your house, क्या यार पिताजी बहुत कट करने लगे आजकल. They'll think as if, the parents are trying to dominate. ये नहीं होना चाहिए ना. There they will accept it in the right spirit. Your father is telling you something for my better. You should understand that. Like if suppose, let us take an example of an LIC agent. Okay. He goes every day to his customers. Most of the customers are usually friends. Friend बोलता है यार तू मेरे ऑफिस में आया ना तो अभी चाय पी. ये सब मेरे को LIC का मत समझ. Because at that time, the friend is facing the north and he is facing the south. Right. If he was facing the north and the friend was facing the south, the friend would have accepted that policy immediately. Okay. So coming back to your question, where should the drawing room be? It should be in the northwest or north. Those two sections are good for a hall. Okay. This also includes the dining area. Dining area ideally would be in the east. That is what happens, Vastu makes the designing of flats very difficult. Yes. So do you come across any Vastu compatible flat given that there are so many restrictions? I have worked from 2000. I have met only 2 flats. I have seen only 2 flats which were Vastu compliant. 97%. The ladders are in the wrong direction again over there. So all these builders who go around projecting their All property lies. as... All lies. Nobody is Vastu compliant. I have, in our area, in Malad, in Bombay, there is a place called Malad. There is a Vastu park. The whole society is called as Vastu Park. The building externally are properly according to Vastu. Buildings. But the individual flats are not according to Vastu. Okay.
You can't make it. See, if I say north door is the best for people in Bombay, all the 4 flats on that floor will not be in the north. Na? How can you do? You can't do it. So it doesn't happen. What if I'm making my own house? Is that possible? Then you can design it according to Vastu. Okay, coming to the kitchen, sir. What are some of the tips? Kitchen you should have in the southeast. Ideally, you should have it in the southeast with the platform, kitchen platform. See, now in Bombay, they have started giving 2 platforms, which is not necessary. The single kitchen platform that you have should be in the east. That is, when your wife is cooking, or maybe the cook in the house is cooking, he will be facing the east direction. These 2 platforms, what happens is, one platform is in the north, one platform is in the south. And you will keep your chula, that gas, sigdi, you will keep it over there in the north. Your money will get burnt out. Because north is the direction of money. So even if you have the kitchen in the southeast, if the platforms are not properly designed, or maybe you keep the platform in the south, what happens is nobody likes the food that is cooked. However much the cook slogs, the food will not be appetizing if the cook is facing the south, because the cook is always distracted. South means disturbance. Say in Vastu, we say don't have a south door. Or the only good direction is facing the east. Okay. If you have the kitchen platform facing in the west, that means you are facing the west while cooking. What happens is your friends turn against you. Chances are your friends will start going against you. Then friends becomes enemies. आजकल ये concept निकला है open kitchens. Is the concept of open kitchens okay? It's not good. Vastu mein, it is not good. Even with pyramids, we say don't have open kitchens. Kitchens are to be closed. Because, the process of cooking is the process of doing an yagna. So the person who is cooking should be undisturbed. The idea of open kitchen is the guest has come in the living room and you make an open kitchen so the lady of the house can talk to the guest. Correct. But then everything becomes open. So nothing sacred about that process of cooking then. So best is have closed kitchens. What about the bedrooms? Master bedroom? Master bedroom should be in the southwest. Okay, there are some rules about how the bed should be kept. Suppose you have an shelf above the bed. Then the bed should be moved forward. Because your pillow should not come below that shelf. That some people have wall shelves, Yes. Even a bookshelf doesn't work. Even a bookshelf will. Anything. No shelf should be above your pillow. That means your head should not come under any shelf. So you will have to move the bed slightly ahead. Okay. Also, people keep their, mirrors and all those things, dressing table in the master bedroom. Correct. Ideally, not permitted. I would say don't keep your dressing table in the bedroom, because you might have a big mirror and if it reflects a part of your bed, then if you are sleeping on that bed and at night some part of your body gets reflected in the mirror, suppose you have a bed and the mirror is over here, then your stomach is getting reflected in the bed. Correct. You will get troubles with your stomach. And those troubles will be serious troubles. So medical में फुकट का खर्चा करोगे तुम. What if the bathroom is facing my bed? Is that okay? Precautions will have to be taken. Usually, simple precaution बता देता हूँ. जो unwanted चीजें हैं उनको सबको अगर कट करना है आपको, तो सिंपल है, नीचे हार्डवेयर के स्टोर में चले जाना, 20-25 रुपए में रेड कलर का टेप मिलता है, 2 इंच का टेप लेकर आना और उधर लगा देना. सिंपल सोल्यूशन. बट वो टेप जब आप नीचे लगाते हो तो 15-15 दिन में जाते रहते हैं. तो what you can do is you can take the Asian paint. पोस्ट ऑफिस रेड कलर है, तो वो कलर लेने का 2 इंच का एक पैच लगा देने का. सो यू हैव कट योरसेल्फ अवे फ्रॉम दैट. ओके. फ्रॉम दैट बाथरूम. एक्चुअली हमारे पिरामिड में उसके लिए प्रॉपर सॉल्यूशन है. वी हैव समथिंग कॉल्ड एज स्पायरा बैंड. तो हम लोग वो बाथरूम के ऊपर लगा देते हैं. अच्छा. तो बाथरूम को कट कर देते हैं. ओके. तो फिर वो कहीं पर भी रहे आपके रूम में चलेगा. People also have a lot of issues with not having sound sleep. What are some of the tips? 99%. Reason is that the bed is not properly aligned. Okay. मास्टर बेडरूम के टाइम पे मैं बताने वाला था, छूट गया अपना पॉइंट.
The bed should be away, should not be under any sort of बीम भी अगर जाता होगा तो उसके वहां से हटाकर बेड को ऐसा रखना है कि ऊपर बीम जाना नहीं चाहिए. एंड देन द बेड शुड बी aligned to the north south. That means you keep your head in the south and feet in the north. लोग बोलते हैं हमारा ईस्ट वेस्ट बेडरूम आ गया, ईस्ट वेस्ट बेड गया. नींद ठीक से नहीं आएगी, बिकॉज यू नो दिस इज नॉर्थ एंड फीट आर साउथ. ओके, तो साउथ को हम लोग नॉर्थ में लगाएंगे तो अच्छा रहेगा. Okay. तो योर लूप इज कंप्लीटेड. तो साउंड स्लीप होती है. सो योर बेड शुड बी नॉर्थ साउथ अलाइंड, head should be in the south and feet should be in the north. Okay. Only you are allowed to, after a person dies, we keep the head in the north. Why? Because it is a dead body. Doesn't make उसको अभी sense. स्लीप करने का कोई, अच्छा. उसका ब्लड भी सर्कुलेट नहीं हो रहा है. Coming to the children's room. हाँ, children's room should be in the west, actually in the east. That is the best room for the children so that they rise up early. ईस्ट में जो रूम होगी ना, जो 9 सेक्शंस है उसमें जो ईस्ट वाला सेक्शन है उधर अगर बेडरूम बनता है चिल्ड्रन का तो दैट इज गुड फॉर देम, बिकॉज उस रूम में जो सोता है वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं. बट उधर भी द चिल्ड्रन आर मोर देन 12 years, देन द बेड शुड बी नॉर्थ साउथ. लेकिन उनका स्टडी टेबल है ना ऐसे डिजाइन करने का, उस वॉल पर रखने का, भले विंडो होगा उधर सामने तो भी स्टडी टेबल ईस्ट वॉल को ही फिक्स करके रखने का. So that when they sit for studying, साउथ में देखेंगे तो 10 बार पढ़ेंगे तो भी बाहर नहीं होने वाला वो. वेस्ट में होगा तो बीच आप जाकर देखोगे तो बुक के बीच में कॉमिक्स डाल के पढ़ रहा है. You know, he gets distracted. नॉर्थ में कोई फायदा नहीं, बिकॉज इज चाइल्ड. नॉर्थ में मनी कुबेर का उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. तो दैट इज अ वेस्टेड अटेम्प्ट. ईस्ट में 2 बार पढ़ेगा बाहर हो जाएगा. तो दैट इज बेस्ट ईस्ट में. और एक चीज कर सकते हैं, उनको बोलने का एक हाथ से ये मुद्रा पकड़ कर रख पढ़ते हो. ये पकड़ने से क्या होगा, 2 बार पढ़ेगा ना, इट विल बी प्रिंटेड ऑन हिज माइंड. तो एग्जाम में खाली अगर कहीं पर अटक गया वो लिखते लिखते तो जस्ट ही हैज टू थिंक एंड जस्ट डू दिस सेम मुद्रा अगेन. उसको सामने पेपर्स दिखने लगेंगे, वट एवर ही हैज रेड. सो देन दिस इज अनदर वे ऑफ कॉपिंग इन द एग्जाम, बट यू गेट गुड मार्क्स. Okay. What about the guest bedroom? Guest bedroom should be in the northwest. In Bombay, people don't like guests coming to their room at all because their schedule is like that. तो वो पुराने दिन थे कि भाई कोई आया तो 1.5 महीना रहने वाला है. ओके, आप अगर नॉर्थ वेस्ट में उस गेस्ट को सुलाते हो तो 4-5 दिन में उसका काम हो जाता है, हफ्ते भर में निकल जाता है. अच्छा. या वो बोला है कि मैं हफ्ते के लिए आ रहा हूँ, क्या काम है तेरा? बॉम्बे में लोग पूछते हैं, बेशर्म होके पूछते हैं, किस काम के लिए तू आ रहा है? तो यार आई गेट एन आइडिया कि बाबा तेरे को 2 दिन का ही काम है बॉम्बे में. चल 2 दिन मैं छुट्टी निकलूंगा, 2 दिन में तेरा काम कर ले, मैं तेरे साथ घूमूंगा, तीसरे दिन निकल जा भाई. बिकॉज माई वाइफ गेट्स फ्राइजेड एंड और माई मदर गेट्स फ्राइजेड. तुमको संभालने का हफ्ते भर किसको जमने वाला है. सो इफ यू वांट दैट दिस एंड ही गोज इन अ फ्रेंडली वे, काम हो गया मेरा, ही गोज हैप्पी. सो उसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में जो रूम आएगा ना वो गेस्ट रूम होनी चाहिए. सो गेस्ट्स लीव अर्लियर. Okay. And their work is done. Okay. They don't overstay. Never give a guest the southwest room. That is the master's room. वो 6 दिन के लिए आएगा, 60 दिन जाएगा नहीं. He will overstay. He'll start lording over you. And you'll have to listen to him. Because southwest की room जो है वो master corner का है ना, master bedroom. So the master should be there. What about the staircases? How should that be designed and oriented? Staircases should be in the south. South zone जो बीच वाला आता है उसमें होना चाहिए staircases. और वो भी cyclical होना चाहिए, यानी in the direction of clockwise direction में होना चाहिए. यानी अगर आपने ऐसे ऐसे बनाए या स्पाइरल भी बनाए, वो हिंदी फिल्म्स में रहते थे ना स्पाइरल लैडर्स ऐसे छोटे से आयरन के, वैसे एक्चुअली घर में होने नहीं चाहिए. यू हैव टू मेक इट स्क्वायर गोइंग अप, बट दे शुड बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. डोंट कीप एंटी क्लॉकवाइज staircases in your house. That leads to ill health. Okay, एंटी क्लॉकवाइज और तुम्हारे काम भी नहीं बनेंगे, काम अटकते रहेंगे वगैरह. तो क्लॉकवाइज ladders are good. Okay. You have also spoken about some tips to keep in mind when we are looking to buy a plot. Can you please tell us a little about this? Buying a plot is
the best way to do it is, there are a lot of things about it, you know. Oh, you have to go to that site and then dig up a 1 feet by 1 feet by 1 feet and 1 feet deep. एक परफेक्टली ऐसा कट करके मड निकालो, फिर उसमें पानी डालो. अगर पानी लीक हो गया उस जमीन में तो ये प्लॉट मत खरीदो. अगर पानी उधर के उधर रहा है 1 घंटा तक तो then this is a good plot. Okay, if after pouring the water the mud rises inside and the water overflows from that, then it is supposed to be a very lucky plot. ऐसे सब there are many experiments, but the best way to do it is, ये आप ऐसे होल करके स्क्वायर बाय 1 फीट बाय 1 फीट बाय 1 फीट का होल करके आप मट्टी निकाल कर रखो. एक आधा घंटे के बाद वापस वो मट्टी अंदर डालो. जस्ट pour it from the top. अगर वो लेवल पर आती है तो ठीक है, प्रॉपर्टी इज गुड. अगर इफ द मड sinks like this, okay, you are not patting it down, you are just pouring. तो फिर भी if it is sinking, then this is a loss making property. If when you pour it from the top, it rises up like a hump, camel hump के जैसा आता है, तो it is a very profitable property. These are technical things. करते हैं लोग. वास्तु वालों को बुलाओगे तो खोदने का, फिर रखने का, फिर वापस करने का, 4-5 घंटे निकाले तो he gets a good fat fee for that. But the easiest way to check a property, समझो आप फ्लैट खरीद रहे, प्लॉट खरीद रहे कहीं पर, take your wife along with you. If she feels happy, it's going to be a good property for you. Buy it. बाद में उसके अंदर जो वास्तु का प्रॉब्लम्स होगा वो सॉल्व कर सकते हो तुम. लेकिन एटलीस्ट दैट, बिकॉज यू नो विमेन कैच वाइब्स. अगर जगह पॉजिटिव है तो शी विल बिकम हैप्पी. या किसी जगह में जाकर बोल सकते नहीं इधर रुकना नहीं, अपन चलो निकले यहां से, देन डोंट बाय दैट प्रॉपर्टी बिकॉज शी हैज गॉट सम नेगेटिव वाइब ओवर देयर. ओके, बिकॉज एनीवे द वुमन इज गोइंग टू स्टे इन दैट प्रॉपर्टी Correct. for most of the time. She is going to live longer than you also. Okay, so buy that property where she has become happy. Okay, so before we finish the segment on home, I have 2-3 questions regarding paintings. One, you know, आजकल सभी के घर में paintings हैं या pictures हैं. What kind of paintings do you recommend, and what kind of pictures, paintings, or आजकल लोग sculptures? horses के pictures, because it is a Exactly. feng shui idea. Okay, it's not a Vastu idea. It is Horses. not a vastu idea. It is a feng shui idea. Okay, Where 7 white horses or 7 brown horses. running horses. Running horses. Running ही होने चाहिए. Yes. तो आइडियली ना वो प्रिंट्स मैंने देखे हैं, ब्राउन हॉर्सेस गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और व्हाइट हॉर्सेस कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, तो रखने की तरह पहले, यू नो, इफ यू हैव दिस रनिंग हॉर्सेस, राइट टू लेफ्ट होगा तो ब्राउन हॉर्सेस रखो. व्हाइट हॉर्सेस राइट टू लेफ्ट नहीं चाहिए. लेफ्ट टू राइट अगर भाग रहे हैं, यानी लेफ्ट को टेल है और राइट को फेस है, तो व्हाइट हॉर्सेस होने चाहिए. और फिर ये व्हाइट हॉर्सेस कहां पर रखने के, आपके नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रखने के, सो दैट दे आर मूविंग इनटू द प्रॉपर्टी. ब्राउन हॉर्सेस है तो नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ को तरफ भाग रहे हैं. या देयर इज वन पोस्टर जहां पर ऑल द हॉर्सेस आर फेसिंग द फ्रंट. ओके, तो उसको आप नॉर्थ में रखो, दैट इज ओके. फिर लोग वो महाभारत का सीन रखते हैं, कृष्ण अर्जुन, वो रखो मत, क्योंकि इट इज अ युद्ध का ग्राउंड पर है. तो डोंट कीप दैट. तुम्हारे घर में कुछ ना कुछ छोटा मोटा युद्ध, स्पेशली इफ योर यंगर ब्रदर इज स्टेइंग विद यू और एल्डर ब्रदर इज स्टेइंग विद यू, तुम्हारे घर में बैटल्स होने के चांसेस है. कुछ भी इश्यूज आ सकते हैं. और डार्क, ये अभी बैटमैन रखा है इधर, Yeah. इतने डार्क, उसका कंप्लीट आउटलाइन ही दिखता है, बाकी कुछ दिख नहीं रहा है. Okay, these kind of posters are not to be kept in the house. Okay, अच्छा तुम विंसेंट वैन गॉग के वो ये रखो ना, फ्लावर्स रखो, बहुत ब्यूटीफुल मिलते हैं जहांगीर आर्ट गैलरी में, प्रिंट्स उसके एक्सपेंसिव बट देन रियली गुड पेंटिंग मिलते हैं. फ्लावर्स रखो, Nature. ब्यूटीफुल सीन्स रखो. और डेड लोगों के फोटोज, उसका एक बहुत बड़ा इशू रहता है. मैं यूजुअली सब लोगों को बोलता हूँ कि डेड है तुम्हारे खुद के हैं, ठीक है, रिलेटिव्स, ग्रैंडफादर, तुम उनके पास खेले थे तो तुमने रखा है ग्रैंडफादर का पेंटिंग. ऑयल पेंटिंग मना कर रखते लोग. अगर रखना ही है तो साउथ वॉल पे लगा दो, देन दे विल नॉट कॉज एनी डैमेज टू यू. नहीं तो दीज फोटोग्राफ्स और पेंटिंग्स हैव एन एनर्जी ऑफ देयर ओन, तो दैट विल, डेड सोल को तुम वापस रिवाइव कर. आई हैव सीन पीपल अगरबत्ती दिखाते ग्रैंडफादर के फोटो को, ही इज पास्ड ऑन ना.
एक पहले 15 दिन या एक साल भर तुमने रो के लिया, तब तक तो वो सोल है, इट वांट्स टू प्रोग्रेस. तुम अगरबत्ती दिखाते हो, वो अटका हुआ है. ओके, पहले साल बाबा ब्लेसिंग तुम्हारे ऊपर बहुत प्यार है, वो ब्लेसिंग देगा. दूसरे साल तो विल गेट फेड अप. तीसरे साल तक तुम्हारा कहाँ पर नुकसान करेगा तुमको मालूम नहीं पड़ेगा. तो यूजुअली मैं बोलता हूँ 15 दिन हो गए ना, तुम्हारा पिताजी जाके 13 दिन हो गए, तुमने सब पूजा कर ली ना, पानी पिला दिया उनको, जाओ बोला तुमने हाथ जोड़ के, हमारा सब ठीक है, तुम जाओ. 13 day celebration is that only. Correct. And then you celebrate with the family with a good grand lunch. 13 day यही होता है. तो वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं ना. अभी पिताजी का फोटो लो, उसको रेड कपड़े में बांध दो, कबड़ में रख दो. So there are some common questions, sir, that come in the minds of people. These days we are married more to our profession, to our careers than our own spouses. Yeah. So how can success in careers, professions or businesses be ensured? आप क्या tips suggest करेंगे? First of all, you should be in a career which you like. Basic common sense. Okay, what you like, you will be able to do better. But वहाँ पर भी, when you go to the office or maybe in your business, office vastu compliant. Okay, then we have got, in pyramids, I got these kind of solutions. Like you're not able to get along with your boss. Then I have got a pyramid called as Harmony Pyramid. You use it. It is a double pyramid tool. You use it. Your name on one side, the boss's name on the other side, other pyramid. And you use it, and in 15 days, the boss will be coming to your table and having tea with you. I can ensure that. Every 15, in 15 दिन में वो होगा ही. हमने results लिए ऐसे. Yeah, you know, mother-in-law and daughter-in-law don't get on. Then they can use this Harmony Pyramid. One of them has to take that, sort of, put the step forward, take one step forward and start using the Harmony Pyramid. You can restore harmony in any area. Like we have got, in pyramids, I have got a system called as Quantum Leap. Okay. So what we do is, there are two pyramids. One is a Fortune Pyramid and another is a regular Fortune Wish Pyramid, and one Reiki Pyramid, Master Reiki Pyramid. तो जिस आदमी को आपको like आपके सर्कल में ही नहीं है, like you're doing this podcasts. I was not in your circle, but you got me somehow to this program, right? Yes. Similarly, you might be having, मेरे को अभी I want to interview Rahul Gandhi, and you have got no connections with Rahul Gandhi. So you put Rahul Gandhi's name in that Fortune Wish Pyramid and start energizing, and you will get in touch with Rahul Gandhi within the next 3 months. You will have a podcast with him. These kind of things we have got in our pyramids. So, sir, since you're talking about the pyramids, we see that pyramids have been a part of our traditional culture across all religious and spiritual traditions. हम मंदिर ले लो, मस्जिद ले लो, church ले लो, they're all pyramids. The Egyptian pyramids have been around for thousands and thousands and thousands of years. So, what is the science behind pyramids? कैसे हमारी इच्छा manifest होती है? कैसे हमारी desires पूरी होती हैं? See, I'll show you a pyramid first. A pyramid is a structure like this. It is basically a 4-sided structure. It has 4 sides. Don't go by these designs. That is not important. Okay. Just 4-sided structure, and it has a base. Now, the pyramid that is used for manifesting. Like, in Egyptian pyramids, more than 200 pyramids were built by various pharaohs. But when the Britishers went and excavated, they found only 13 pyramids in which mummies were intact. The body of the pharaoh was intact after 2000 years. Okay. They excavated in the, the pyramids in the World War II area. Correct. Around that time. Yes. Okay. But the bodies were found intact in only 13 pyramids. Okay. The other mummies in the other pyramids, first of all, the pyramids were not in good condition. But that is not important. Even whether the pyramid is in good condition or not, the body inside were already decayed and dust, and only dust was available or ash was available. But in 13 pyramids, it was found that the body is intact, so much so that even the belly was soft after it was removed from that sarcophagus. The belly was soft, the eyebrows could be moved. It was as if a person has just slept. Because Egyptian Book of the Dead, according to that, a pharaoh is something like our Indradev. Okay. Equivalent to our Indradev in Egyptian stories. He may be anyone. He might be a robber also. He must be the Senapati who stabbed the
actual pharaoh or gave him a cup of poison and now has become the pharaoh. Everybody wanted to become the pharaoh in Egypt. Why? Because a pharaoh has a destiny to take care of Egypt. So everybody wanted that job. Okay, he'll be the protectors of Egypt. So much so that as soon as they became pharaohs, they started building up pyramids. Why? Because they knew that मैंने इसको जहर पिला के मार डाला और मैं किंग बन गया. Some of the pharaohs had only tenures of less than a year. Yes. The reason was somebody else stabbed them. But वो एक पिरामिड बनाने चालू कर देता है. Because मैं मरने के बाद my body should live. My body should not be disintegrated. As far as the body doesn't disintegrate, the soul remains there. And when the pharaoh's soul remains there, like there will be many other pharaohs, all their souls hopefully remaining intact, and they will be worrying about Egypt. So if a pharaoh, some future pharaoh, is confused sometime or is threatened by something sometime, then all these dead souls will go and speak to that pharaoh and give him counsel how to protect Egypt and how to expand Egypt. Just like we have Tibetan Book of Dead, or we have Garuda Puran in our Correct. Hindu culture. Yes. They have got an Egyptian Book of the Dead. उसके ऊपर pharaoh के ऊपर chapter है कि they want their souls to be preserved. That is why they built the pyramids. So naturally, they knew something about the pyramids, that when you have a perfect shape like this, the body is preserved. Okay, only 13 pyramids are properly designed. That is why the mummies were preserved in only 13 pyramids. Okay, now what is the proper design? Agar if you want the pyramid to work as an energy center or an energy collector or an energy proper distributor, ये सब काम pyramids करते हैं, तो it should be hollow from inside. अब Egyptian pyramids are not hollow from inside, but they all have the king's chamber. छोटा सा एक एरिया 1/3 हाइट पे एक छोटा सा एरिया रखा हुआ रहता है, where somebody can go and sit and meditate also. जो अभी इजिप्ट में जो पिरामिड है, पीपल गो अप ओवर देयर, दे हैव टू क्रॉल अप एंड देन ओनली वन पर्सन कैन सिट एट वन टाइम. तो वो नीचे आया तो दूसरा आदमी जा सकता है वगैरह, लाइन लगती है. तो देयर इज अ किंग चेंबर इन ऑल दीज पिरामिड्स. They could, because they were using big stones, they could only keep a small space over there. But that place is a place where all energy work can be done. यानी वहां पर तुम बैठ के कुछ सोचो तो it will be done. ये पिरामिड्स है ना, एग्जैक्टली यहां से ये समझो बेस है. ओके, लेट अस लुक एट द पिरामिड. ये देखो, ये पिरामिड ऐसे है. मैं आपको बता रहा था कि सपोज दिस इज द बेस, देन दिस एंगल फ्रॉम हियर, this angle to the base is exactly 51 degrees, 51 minutes, 14 seconds. Okay, exactly. अब ये है ना, आप कॉपर का बनाओ पिरामिड या लकड़े का बनाओ या क्ले का बनाओ, तो 51 डिग्रीज 51 मिनट्स, 51 डिग्री शायद लाओगे आप, 51 मिनट्स एंड 14 सेकेंड्स कहां से लाओगे? करेक्ट. इसलिए ये सीएनसी मशीन में ये डाइस डेवलप किए. The pyramid becomes an energy center only when the angle of the base is like this. बाकी तुम पेपर का पिरामिड बनाओ. सी, पेपर का तुम अगर ऐसे एग्जैक्टली बनाओगे तो इट विल वर्क. तुम लेदर का बनाओगे, ड्राइड लेदर का, एग्जैक्टली 51 डिग्रीज 51 मिनट्स 14 सेकेंड्स का अगर एंगल, बेस एंगल लेकर आ सकते हो. बेस एंगल इज फ्रॉम हियर, नॉट फ्रॉम द कॉर्नर, फ्रॉम द मिडिल पोर्शन. ये एंगल जो है, ये प्रॉपरली तुम लाओगे तो तुम किसी भी मटेरियल का पिरामिड बनाओ, इट विल वर्क एज एन एनर्जी टूल फॉर यू. देखो, मैं आपको बोल रहा था ना, ब्रह्मस्थान सेंट्रल पोर्शन जी. तो इधर ये पिरामिड को देखोगे ना, दिस इज द ब्रह्मस्थान, एंड द ब्रह्मस्थान इज इन द शेप ऑफ अ पिरामिड, वर्चुअल पिरामिड, विच हैज 51 डिग्रीज 51 मिनट्स का एंगल है उसका. ओके, तो आकाश तत्व यानी ब्रह्मस्थान का एलिमेंट. ओके, आकाश तत्व इधर भी है, पिरामिड के अंदर भी है और बाहर भी है. Correct. और यूनिवर्स में भी है. ओके, इफ आई वांट टू कम्युनिकेट विद द यूनिवर्स, देखो साधु लोग जाते हैं हिमालय में, 20-20 साल खाली कॉन्सेंट्रेशन लाने को लगता है, फिर उसके बाद पूरी साधना करेंगे. और करेंगे क्या? कुछ वहां पर एक, मेरे को ये नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज चाहिए बोलेंगे. इज दैट सिंपल? दैट इज, इट इज दैट सिंपल. बट दिस वेंट 45 years ओनली टू गेट कनेक्टेड टू द यूनिवर्स.
फाइनली दे विल गेट कनेक्टेड टू द यूनिवर्स. हमारे पास ये इतना सिंपल टूल है. देयर इज यूनिवर्स इनसाइड, देयर इज यूनिवर्स आउटसाइड. यहां पर आप ऐसे हाथ रख के कुछ भी बोलो, दैट मैसेज विल बी कन्वेड टू द यूनिवर्स. बट बी सीरियस अबाउट इट. Okay. कोई फ्रिवलस चीजें मत पूछो. यू रियली नीड मनी, यू आस्क फॉर इट, यू विल गेट मनी. कहीं ना कहीं से तो आ जाएगा. हमारे पास ऐसे मनी टूल्स वगैरह है. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ दिस पिरामिड. आकाश यंत्र इज यूज टू गेट कनेक्टेड टू द आकाश. ओके, इसके अंदर ब्रह्मस्थान, ब्रह्म तत्व आकाश है, बाहर भी आकाश है. यू गेट कनेक्टेड टू द यूनिवर्स. इट इज एज सिंपल एज दैट. And there are different kinds of pyramids for different There desires. are more than 350 kinds of pyramids for different things. We have got, ब्रह्मस्थान में हम लोग एक पिरामिड लगाते हैं. घर का सबसे बड़ा जो पिरामिड रहेगा वो हम लोग ब्रह्मस्थान में लगाते हैं. That is to anchor you to the ground floor. There is some kind of energy connection. It is as good as you are living on the 15th floor, but you will get all the results as if you are living on the ground floor. तो आपने जो सोचा वो होगा. One tip for couples to have a harmonious relationship given. For couples, we have a marriage pyramid. Something like the harmony pyramid only. एक साइड पे हस्बैंड का नाम रहेगा, उसका फोटो रहेगा, दूसरे साइड पे वाइफ का नाम होगा, उसका फोटो होगा. This is for people who want to marry a specific person also. Suppose a girl wants to marry a certain boy. Yeah. And there are some hurdles. So, the girl can take the marriage pyramid, put her photograph in one area, and the boy's name in the other area. अगर बॉय का फोटो मिल सकता है तो वो डाल देने का, उसको एनर्जाइज करने का. मैंने आई हैव गिवन फ्रॉम 2005 to now, I have maybe given out 1100 मैरिज पिरामिड्स. और हर बार 60 डेज के अंदर कम से कम एंगेजमेंट हो जाती है. लेकिन ये चीज उसने खरीद ली है. अभी शादी के बाद वो हस्बैंड को पकड़ के रखने का है, एंकर रखने का है. हाँ. तो फिर वो लड़की के साइड पे, अभी लड़का तो मिल गया, शादी तो हो गई, तो वहां पर अपने हस्बैंड का फोटो रख दो. एंड जस्ट कीप ऑन एनर्जाइजिंग एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. एनर्जाइजिंग कॉस्ट्स यू अबाउट 2.5 minutes, 3 minutes मैक्सिमम. ओके, खाली हाथ रख के रखना है, बाकी कुछ नहीं. सामने टीवी देखते वक्त भी करो, बट कीप योर हैंड्स, पाम्स ऑन द पिरामिड्स, 2 pyramids. हस्बैंड परफेक्टली आपके साथ लॉयल रहेगा. आराम से एंकर कर सकते हो उस हस्बैंड को. बच्चे नहीं हो रहे हैं, they want to conceive but I can't conceive. देखो, बच्चे नहीं हो रहे, उसके लिए साइंटिफिक मेडिकल रीजंस रहते हैं. तो तुम डॉक्टर्स की तो हेल्प ले रहे हो. एक बार आईवीएफ ट्राई किया, हुआ नहीं. वो एक बार नहीं होना इज वेरी पेनफुल फॉर द वुमन, बट द वुमन ट्राइज इट अगेन. एंड आई हैव मेट विमेन हु हैव डन इट 5 times. दैट मीन्स उसका हिप स्ट्रक्चर पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है. ओके, शी विल हैव अ बैक प्रॉब्लम एंड अ हिप प्रॉब्लम फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ अगर 3 बार 4 बार कर दिया आईवीएफ तो. सो इट इज वेरी सीरियस. तो हम लोग क्या बोलते हैं, तुम पहले बार जब जा रहे हो, आईवीएफ नहीं, बाकी कुछ भी मेडिसिन ट्राई कर रहे हो, या कुछ स्पर्म काउंट का इश्यू आ गया वगैरह, यू आर ट्राइंग टू हेल्प ओवर देयर, यानी यू आर ट्राइंग टू गेट सम हेल्प, मेडिकल हेल्प ओवर देयर. साथ में हमारे पास एक वास्तु स्लीप बोल के टूल है. ओके, वो बेड के अंदर 9 शीट्स रहते हैं, जिसके अंदर एक में 27 by 27 पिरामिड्स है. तो रफली वो 9 शीट्स का तुम टोटल मारोगे तो 6500 के ऊपर पिरामिड्स है. इट इज दिस थिक और पिरामिड्स है सब. तो आपके बेड के नीचे डाल दो. सेंटर में रेड वाला एक शीट आता है, उसके अंदर देयर इज अ बॉक्स ओवर देयर. यू पुट अ विश के आई एम ट्राइंग टू कंसीव. तो विश लिखोगे तभी ऐसा लिखने का कि आई हैव कंसीव्ड. अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अ बॉय, आई हैव कंसीव्ड अ बॉय. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अ गर्ल, आई हैव कंसीव्ड अ गर्ल. ऐसा कुछ लिख के उसके ऊपर हो. देन जस्ट स्लीप ऑन दैट बेड. उसके ऊपर गद्दा डाल दो और आराम से सो. एंड लेट द डॉक्टर्स कीप ऑन डूइंग देयर वर्क. You just sleep on the bed where you have put these 9 sheets. Okay, people have waited for 8 years, tried IVF twice. Okay, third time भी IVF ही करने वाले हैं, लेकिन third time वो सक्सेसफुल हुए मेरा यूज करने के बाद. यानी about 8 months, 6 months down the line, things go smoothly. Do spirits exist, and how do I know if my house is possessed with spirits? Gods exist, isn't it? So spirits will be there. And see, हम लोग स्पिरिट्स बोलते हैं तो हम लोग नेगेटिव सोचने लग जाते हैं. ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां पर स्पिरिट्स नहीं है. स्पिरिट्स अभी इधर भी होंगे. फिर हम लोग
because they are benign or they are good, we'll say they are angels. But they are spirits. Angels are also spirits. Okay, angel का पूरा therapy, पूरा book छप गया उसके ऊपर. All spirits are not evil. Some are there to help you also. So ऐसा कुछ नहीं है कि spirits नहीं है. Spirits तो होते ही है. How to know whether there are spirits? There are dowsing practitioners. They come with a pendulum. तो वो आपको बता सकते हैं कि यहाँ पर spirits वगैरह है. है तो है, रहने दो. They are staying. वो कुछ space खा नहीं रहे तुम्हारे. अगर वो उसकी वजह से तुम्हारे घर में sickness आ रहा है, अगर उसकी वजह से तुम्हारे घर में बिजनेस में लॉसेस आ रहे हैं, तो फिर उसका कुछ उपाय कर सकते हैं. तभी उसका सोचो, नहीं तो लेट देम लिव एंड यू लिव कंफर्टेबली. क्या फर्क पड़ता है? How do I know if I have evil spirits? Will they give me sickness? तो they will give you sickness, they will give you losses in business, they'll see that you don't progress at all. ऐसा वगैरह हो गया तो then there is something negative. Some dowser will tell you that it is a negative spirit. तुम्हारे दादाजी के टाइम पे ऐसा हो गया था, दादी जी के टाइम पे वैसा हो गया था. तो उसके हिंदू रिचुअल्स बहुत सारे होते हैं. दे डोंट वर्क. हमारे पास एक टूल है, एक डिस्क जैसा चीज है. उसको हम लोग क्या करते हैं, जो मेन डोर है ना उसके सामने लगा देते हैं. एंड देन यू डू द क्लेंजिंग प्रोसेस एवरी इवनिंग. 6-7 दिन में वो प्रॉब्लम चले जाएगा. 7वें-8वें दिन पे तुमको अगर बिजनेस में कुछ पॉजिटिव नहीं दिखा तो मेरे को पकड़ लेना. सो एज वेरी सिंपल. एक्चुअली हमने पोजेशन के केसेस भी सॉल्व किए हैं जहां पर हमने यही डिस्क वापरा है. खाली वो डिस्क रख देने का सामने, एवरीथिंग, और बोल देने का रखते हो इधर जो तुम लोग है ना सब लोग अभी निकलो यहाँ से, खाली करो, हमें भी तुमको यहाँ पर रहने नहीं दे रहे. यू आर नॉट वेलकम. यू कैन स्पीक ओपनली, ऐसे ही बोलते रहने का. यू आर नॉट वेलकम, प्लीज लीव. एक केस मैं बताता हूँ. मेरे गुरुजी ने काम किया था तो मैं उनके साथ काम कर रहा था, जितेन भट्ट. तो अहमदाबाद में एक प्लॉट एक आदमी ले लिया. इट वॉज सम बरियल ग्राउंड. ही वॉज अवेयर ऑफ दैट, बट बिकॉज इट वॉज अ बरियल ग्राउंड इन सम हॉच पॉच बिजनेस ही वॉज डूइंग. ही वॉज अ बिल्डर ना. उसको क्या हो गया था, 2 बड़े प्लॉट्स थे. ये प्लॉट जो था वो रोड को टच था. अहमदाबाद में द ले ऑफ द लैंड इज सच के तुमको हर जगह पे रोड्स रहते हैं. तो पीछे वाला प्लॉट इसको मिल गया था. ही थॉट कि आगे वाला प्लॉट अगर मिल जाएगा तो मैं मेन रोड के साथ कनेक्ट हो जाता हूं. बट ये मिल नहीं रहा था पहले, तो उधर बिल्डिंग चालू कर दिया, वो सब ठीक हो गया. और ये वो जगह जो थी वो बरियल ग्राउंड थी. आई डोंट नो, समहाउ ही प्रोक्योर्ड इट. इट वाज अ बिग प्लॉट. तो प्लॉट ले लिया, वो बिल्डिंग उधर बन गई, वहां पर लोग रहने आ गए वगैरह वगैरह. बिकॉज दिस प्लॉट ही इज एक्सकेवेटिंग नाउ. तो अभी इधर हमको बिल्डिंग बनाने का है. तो जितेन सर के पास वो लोग आए थे कि सर ऐसा ऐसा जगह ले लिया. अरे काय को ऐसा जगह लिया तुमने, पहली बात तो नेगेटिव जगह ले रहा. अच्छा ठीक है मैं करता हूँ. तो एक्चुअली आई हैड गॉन विथ हिम. तो वो जगह को बोला कि ये जगह ऐसे रह दो, काम मत चालू करना, डोंट स्टार्ट एक्सकेवेटिंग एंड ऑल दैट, फर्स्ट आई विल गो देयर. तो वहां पर गए तो बोला कि कितना बड़ा प्लॉट है, फिर इसके अंदर झाड़ कितने हैं. तो देयर वर सम 3 ट्रीज ओवर देयर. तो बोला इतने साइज का प्लॉट कहीं पर अप कंट्री, कहीं पर कंट्री जगह पे तू ढूंढ ले, और उसमें भी 3 झाड़ होने चाहिए, नहीं तो तू ट्रांसप्लांट कर वहां पर, और वो जगह छोड़नी पड़ेगी तेरे को. तो कहीं पर चीप में जगह मिल गई. ये तो अहमदाबाद सिटी की जगह है. तो इक्वलेंट प्लॉट ही बॉट, थोड़ा सा छोटा ही लाया, लेकिन वहां पर 4 झाड़ थे. तो जितेन सर ने अप्रूव कर दिया, चलो ठीक है. देन वी टुक आवर, हमारे पास एक मैक्स बोल के पिरामिड है. तो बोले फुल तमाशा करने गए. तो वो एक पूरा बहुत बड़ा पिरामिड लेकर गए, उधर बीच में रखा. देन ही स्टार्टेड स्पीकिंग टू द स्पिरिट्स कि देखो कल सुबह को मैं आने वाला हूँ और तुम लोग के लिए खाना लाऊंगा. तुम लोग सब इधर झाड़ भीड़ पे लटके हो ना, सब मेरे को मालूम है. तो कल सुबह को तुम्हारा खाना, लेकिन उसके बाद निकल जाने का यहाँ से. और तुमको है ना, वो पिरामिड के साथ नीचे एड्रेस लिखा था एक्चुअली कि ये जगह पे जाकर रह जाओ, वहां पर भी तुमको खाना देंगे, साल में एक बार तुमको उधर खाना देंगे, अच्छी पार्टी देंगे. इट वॉज अ मुस्लिम बरियल ग्राउंड. तो बोला कल बिरयानी सब मैं लेकर आता. एंड नेक्स्ट डे वी वेंट ओवर देयर एंड वी जस्ट स्प्रेड द बिरयानी ऑन द ग्राउंड सॉर्ट ऑफ. ओके, वी स्प्रेड द बिरयानी एंड दोज. एंड जितेन सर सेड विल वेट फॉर सम टाइम. इन लोगों को आधा पौना घंटा तो देना होता है. आधा पौने घंटे के बाद बोला सब लोगों ने खा लिया, अभी निकल जाओ, इस एड्रेस पे चले जाओ, हम कल से ये जमीन वापरने को ले रहे, ये झाड़ भीड़ कुछ रहने वाले नहीं उधर.
उधर इधर 3 झाड़ है, उधर 4 झाड़ है, उधर जाके आराम से रहो, और तुम पहुंचोगे ना, परसों तुमको मैं वहां पर बिरयानी खिलाता हूं, समथिंग लाइक दिस. एंड नेक्स्ट डे ही टोल्ड द बिल्डर, एक्सकेवेट करो. फिर उसके बाद हमने उधर बहुत सारा पिरामिड का वर्क किया. एवरी फ्लोर पे हम लोगों ने पिरामिड्स का काम किया उधर. एक 15 साल पहले की बात है ये. तो वो जो पहले वाली बिल्डिंग थी जहां पर अच्छे अच्छे लोग आए थे, दे हैड कम इन कार्स वगैरह, तो उसी कार में रहे. और यहां पर जो लोग थे वो कैसे आए, दो इट वॉज मेन नियर द रोड, मेन रोड, लोगों को मालूम था ना ये बरियल ग्राउंड है, तो जो जरूरतमंद है, जिनके पास पैसे कम है, वैसे ही लोग आए. पीपल केम इन साइकिल्स, यानी लोगों के पास साइकिल थी तभी. अभी उन लोगों के पास मर्सिडीज बेंज कार है. चिल्ड्रन हैव गॉन अब्रॉड एंड ऑल, क्योंकि वो इतना एनर्जाइज्ड बिल्डिंग है. वंस द प्लेस इज एनर्जाइज्ड, you can achieve things much easily. Okay. Many people these days do a short course on Vastu Shastra and call themselves Vastu experts. What are the dangers of doing such Vastu? I'll give you my example. I get students from everywhere. Okay, somebody had come from Delhi. She did her course. She stayed in Bombay for 7 days, spent on hotels and all that. She stayed with me for 7 days. She learned the course from me. वो कुछ नॉर्थ साइड पे where 10,000 रुपीज का पिरामिड लगना चाहिए था, वहां पर उसने 30,000 का लगाया. एंड दिस मैन कंप्लेन टू मी कि सर मेरे काम बनते आते 6 महीने के बाद बेचारा वापस कंप्लेन कर. ही कॉल्ड मी फर्स्ट, तो मैंने बोला वो दिल्ली में वो लेडी है, उससे कर लो तुम. बहुत बड़ा घर था, ऑलमोस्ट 6 लाख रुपया उस आदमी ने खर्चा किया. आफ्टर दैट 6 महीने के बाद मेरे को कॉल करता है, बोलता है सर वो आपने स्टूडेंट जो आपका भेजा था ना, वो कुछ मेरे को रिजल्ट्स नहीं आए. बोला क्या हुआ? नहीं कुछ रिजल्ट नहीं आया, बनते 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 बात बिगड़ जाती है. तो बोला सब जो किया है वो बता दो मेरे को. नहीं शोड में. तो मैं वो लेडी को बोला वो 30,000 का पिरामिड तूने क्यों लगाया? तेरे को 20,000 रुपये कमीशन ज्यादा मिलेगा इसलिए ना, वो अभी निकालो. एंड आई सेंट हिम अ 10,000 रुपीज पिरामिड फ्रॉम हियर, फ्रॉम एट माई कॉस्ट. एंड आई सेड रिप्लेस दैट. यानी पिरामिड्स में भी ऐसा है कि हमने सिखाने के बाद भी लोग है ना मिस्टेक्स जानबूझ के करते हैं, या अननोइंगली करा होगा जो भी, लेकिन जस्ट टू गेट सम लिटिल कमीशन एक्स्ट्रा शी यूज दैट पिरामिड. फिर मैंने ये भेजा छोटा वाला पिरामिड, वो लगाया, उसको इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ से रिजल्ट्स आने चालू हो गए. बिकॉज दिस इज दिस इज अ साइंस एंड नॉलेज, तो यू हैव टू पास इट ऑन फ्रॉम अ टीचर टू अ स्टूडेंट. मैं जब सिखाता हूं तो मैं ये कैसा है कि वॉट एवर पिक्चर इज हैपनिंग इन माई माइंड, दैट शुड बी प्रिंटेड इन दैट स्टूडेंट्स माइंड ऑल्सो. देन ओनली ही विल बी एबल टू वर्क द वे आई वर्क. ओके, तो वो होना चाहिए. दैट डजंट हैपन. कॉर्नर में दरवाजे होने ही नहीं चाहिए. अभी देखो ये भी कॉर्नर में ही है ना दरवाजा. तो यानी मॉडर्न आर्किटेक्चर में ऐसा है कि सब दरवाजे कॉर्नर में ही मिलते हैं. करेक्ट. Yes. क्योंकि हम लोग इंटरनल गैलरी बनाते नहीं है. ओके, नहीं तो तुमको राउंड गैलरीज बनानी पड़ेंगी. तो कॉर्नर में ही दरवाजे कॉर्नर में आके तुम्हारे प्रॉब्लम चालू हो गए. यानी नो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में यू कांट से माय हाउस इज वास्तु कंप्लायंट एट ऑल. द हाउसेस, द डोर शुड बी इन द मिडिल, नॉट इन द कॉर्नर्स. द कॉर्नर्स आर वेरी सीक्रेट. यानी ये जो कॉर्नर में दरवाजे रहते हैं, तो वी आर ओपन टू ऑल नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस बिकॉज ऑफ दैट. नॉट एट ऑल नेसेसरी, वो होना ही नहीं चाहिए. तो हाउ टू टेक केयर ऑफ दैट? तुम अभी मैंने कहा था कि नॉर्थ में दरवाजा होना चाहिए. तो पिरामिड्स में हमारे पास टूल है, एक फॉर्च्यून डोर बोल के है और एक पायरा बैंड है. तो हम लोग क्या करते हैं, जहां पर कहीं पर भी डोर होगा, मैंने तो ईस्ट के दरवाजे भी बंद करे, बिकॉज ईस्ट का दरवाजा डजंट गिव यू एनीथिंग. सी इन बॉम्बे में एक कल्चर है कि एवरीबडी वांट्स द ईस्ट डोर. हर एक आदमी जो फ्लैट खरीदता ना बोलता है मेरे को ईस्ट का दरवाजा चाहिए. उसको मालूम नहीं है अंदर से देखने का कि बाहर से देखने का है. तो वॉट एवर द बिल्डर सेल्स हिम, ही सेज आई गॉट द ईस्ट डोर. लेकिन इमेजिन दैट ही हैज द ईस्ट डोर रियली. ओके, रियल ईस्ट डोर है उसका, तो भी क्या होने वाला है? पैसे तो नहीं आने वाले. तो तुम बॉम्बे में कैसे सर्वाइव करोगे? ईस्ट डोर से पैसे नहीं आते. ईस्ट डोर से तुमको रिस्पेक्ट मिलेगा. अगर इफ यू आर इन द एज ग्रुप ऑफ 65 प्लस, तो तुम रास्ते से चलते रहोगे, कोई आदमी कार से उतर के तुम्हारे पैर भी छू लेगा, इतना रिस्पेक्ट मिलेगा. लेकिन वो आदमी तुमको 10 रुपए निकाल कर नहीं देगा.
तो वैसे रिस्पेक्ट का क्या फायदा? बॉम्बे में वैसा रिस्पेक्ट फायदे का नहीं है भाई, हालत हो जाएगी. यू नीड मनी टू सर्वाइव इन बॉम्बे. वो तुमको सिर्फ नॉर्थ से मिलेगा. लेकिन समझो तुम्हारे पास साउथ का दरवाजा है. ओके, समझो तुम्हारा दरवाजा साउथ में है, जो होना नहीं चाहिए वास्तु में, लेकिन मिला है, तो क्या होगा? ऑलवेज टेंशन. पैसे कितने कमाते हो? समझो नॉर्थ का दरवाजा होता तुम लाख रुपए कमाते थे, तो साउथ के दरवाजे में 5 लाख रुपया भी कमा लोगे, लेकिन तुमको कुछ एंजॉय करने को मिलेगा नहीं. Sir, someone's not happy in their job. They don't like what they're doing. What about Most them? of us are. Most are. They say finding what you like doing or finding what you love doing is rarer than finding true love. Yeah. Start liking the things that we have got. Appreciate them. Keep on working and wait. Keep your eyes and ears open for the right opportunity. तुम्हारे दिमाग में है ना कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी बराबर नहीं है, ये जो कर रहा हूं वो बराबर नहीं है, वो थोड़ा सा दिल में लगते रहता है, चुभते रहता है. Always keep your antenna very sharp. If you keep the feeling of not being happy in this job for a very long time, You'll move. you will move. And you will move on to something better which you like. तो वो जो बेटर है ना, उसका विजन पूरा दिमाग में रखने का. एक सिंपल टिप देता हूं इधर. सुबह सुबह हम लोग उठते हैं, तो वी आर हाफ asleep and half awake sort of. उस टाइम पे ना ब्रह्मस्थान में आके बैठने का. ओके, वैसे हाफ स्लीप में आके बैठो ब्रह्मस्थान में, आपके घर के सेंटर में. छोटा सा वो प्लास्टिक का जो कुर्सी रहता है ना, एकदम लाइट, क्योंकि ब्रह्मस्थान हैज टू बी केप्ट एम्प्टी. उसके अंदर कोई गोदरेज का कबर्ड वगैरह रखने का नहीं, सीढ़ी बड़ा आनी नहीं चाहिए उधर, आयन बेन का चीजें नहीं रखनी. एकदम हल्का सा एक प्लास्टिक का कुर्सी रख देने का, उधर रख दिया. इफ इट इज मनी और जॉब ओरिएंटेड और बिजनेस ओरिएंटेड, फेस द नॉर्थ. इफ इट इज अबाउट समबडीज हेल्थ or about somebody's education or your education, face the east. Okay, if you want some help from some friend, face the west. ये 3 डायरेक्शन में तुम फेस कर सकते हो. सुबह को उठे उठे आके उधर बैठ गए कुर्सी, रात को रख दो ना पैसेज में. बॉम्बे के फ्लैट में पैसेज में ही आएगा. ओके, ब्रह्मस्थान ब्रह्म बिंदु तो पैसेज में है, रात को ही रख दो. भले नॉर्थ में दरवाजा है तो भी उधर कुर्सी रख दो. सुबह को आठ के खाली वहां पर बैठने का, बोलने का मेरा ये डिजायर है, लेट इट हैपन. तुमको पहली बार अगर प्रॉपरली नींद में हो ना, प्रॉपरली बोलने को नहीं आया, दूसरी बार रिपीट करो. 3 बार कम से कम रिपीट करो. उठ के आराम से जाके सो जाओ वापस. देखो तुमको 60-70 डेज में क्या रिजल्ट्स आते हैं. You're trained in physics. You were a professor of physics. You were the head of department. From modern science to traditional science, from physics to Vastu Shastra, what made you come into This this? science of energy, it comes from our quantum mechanics only. Okay. जो आइंस्टाइन का क्वांटम फिजिक्स था, रिलेटिविटी वगैरह, वहीं से इसका बिगिनिंग होता है. दिस वास्तु साइंस आज हमको लगता है कि इट इज समथिंग बियॉन्ड साइंस. पहले के लोग तो ये रेगुलरली यूज कर रहे थे. ओके, इट वाज नॉट इवन साइंस फॉर देम, इट वाज अ क्राफ्ट फॉर देम. एनीबडी कुड प्रैक्टिस इट इन द एंशिएंट टाइम्स. Now we have lost the knowledge, we are trying to regain the knowledge, and then we are trying to improve the knowledge. देखो इजिप्शियन पिरामिड जब बने तो उनको मालूम था ना एनर्जी के बारे में, तो इट वाज साइंस ना. 200 अगर पिरामिड्स बना रहे, 200 प्रिंसेस इन वेरियस पीरियड्स ऑफ टाइम, दैट मीन इट वाज अ नोन थिंग ना. हम लोग को लगता है ये पिरामिड वास्तु इज समथिंग एक्सोटिक. इट इज नॉट, इट इज साइंस. मैं बोलता हूं ना, ये ऐसे वापरोगे ये रिजल्ट आएंगे, दैट मीन्स इट इज साइंस ना. It is not different at all. It is science. Only thing, the practitioners are less in number, and the people who know about it are far less in number. So for them it becomes something magic has happened, और कोई वास्तु वाले ने कुछ कर दिया. कुछ नहीं किया यार. तुम्हारा जो आर्किटेक्ट ने अगर वास्तु के रूल्स फॉलो किए होते तो तुमको वैसे भी वास्तु करना नहीं पड़ता था घर में. किसी कंसल्टेंट को बुलाना ही नहीं पड़ता था. If you learn it, you can use it in your life. You can use it to help your friends. You can even make a profession out of it. Thank you so much, sir. I think this is one podcast I haven't prepared for. I was a student listening to a teacher say, and it was so enlightening. Thank you so much for being a part of this podcast. Thank you for calling me, and I hope it does some profit for all those people who see it on video. Of course. Good. Thank you so much. Wishing you the best. Thanks a lot.
Thank you. I hope this podcast has added value to your life. In case you'd like to be a part of our online and in-person yoga, diet, and spiritual programs, you can join our WhatsApp group below, where we post all our upcoming programs and give free tips on health, diet, and lifestyle.